Hello friends, welcome back to series of lectures. This is the 15th lecture of this series of Indian Constitution. In this lecture, we would start to the right to equality, that is 14, 15, 16, 17 and Article 18, that is 14 to 18. So as you know that every provision in the Constitution has got some overarching principles. We had already seen the concept of overarching principles. तो हर प्रोविज़न खास करके फंडामेंटल राइट एनडीपीएसपी में देयर विल बी सम ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल एंड देयर इज सम हिडन कॉन्सेप्ट ऑन विच द पर्टिकुलर प्रोविज़न इज built and on the basis of which that provision, that article has to be interpreted. Now the question arose, what is the overarching principle from article 14 to 16? वैसे तो 18 तक है, but for 14 to 16 what is the overarching principle? Means what is the principle which cannot be violated in any circumstances, and that would be the rule of interpretation of these articles. So the key concept which should not be derogated in any circumstances is the rule of law, social justice, natural justice. So ये आपके overarching principles हैं which could not be violated in any circumstances. वैसे तो सारे प्रिंसिपल्स ओवरआर्चिंग होंगे यहाँ पर, लेकिन इन आर्टिकल से रिलेटेड डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट हैं दैट विल बी रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस and the concept of social justice more importantly. So these are the overarching principles, and these are the principles upon which the article 14, 15 and 16 are founded, upon which the 14, 15 and 16 have been built up. If you remember, केशवनंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? You can amend the fundamental rights. No doubts, you can amend the fundamental rights, but not to the extent of violating the basic structure. So what is the basic structure for article 14, 15 and 16? So these are the basic structure, many more, but these are the main important. और उसमें से भी मेनली सोशल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस भी उतना इम्पोर्टेंट है. मीन्स ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स हैं जो 14, 15 और 16 के अंदर इम्प्लिसिट हैं और उनको आप वायलेट नहीं कर सकते इन एनी सर्कमस्टेंसेस. 14 का आप जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करो, द ओवरऑल इंटरप्रिटेशन शुड बी दिस. सो ओवरऑल स्पिरिट जो इंटरप्रिटेशन की है वो ये तीन ही होने चाहिए. And you also remember that whenever you have to interpret a particular provision which have got some ambiguity, the interpretation should be done in the light of the larger purpose of that provision and the larger purpose of the constitution. That is the rule of purposive interpretation. अगर मान लो आर्टिकल 14, 15 और 16 के इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप बॉटम लाइन पर जाओगे, और बॉटम लाइन क्या है? सोशल जस्टिस. सो कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जो सोशल जस्टिस को वायलेट कर रहा हो वो आप आर्टिकल 14, 15, 16 में नहीं दे सकते, और हर वो इंटरप्रिटेशन जो सोशल जस्टिस के पर्पसेस को प्रमोट कर रहा है दैट विल बी अडॉप्टेड अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16. उसी तरीके से सेक्युलरिज्म में आर्टिकल 25, 26, 27 में जब आप इंटरप्रेट करते हो, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन दीज आर्टिकल्स? In article 25, 26 and 27 सेक्युलरिज्म. अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अब आर्टिकल 25, 26, 27 एक्सेट्रा उसके अंदर द मेन प्रिंसिपल इज व्हाट? सेक्युलरिज्म. 25 एक्सेट्रा में मेन प्रिंसिपल हमारा सेक्युलरिज्म है, और सेक्युलरिज्म का लार्जर पर्पस क्या है? फ्रेटर्निटी, विच दे विल प्रमोट एंड विच एंश्योर द यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. प्रीएम्बल याद करो, उसमें लिखा हुआ है. तो हर चीज का अल्टीमेट गोल फ्रेटर्निटी होगा. सो वहां पे भी ये रूल अप्लाई होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक एलिमेंट. सो विच वी हैव इम्प्लाइडली डिस्कस्ड इन दैट टॉपिक. सपोज देयर इज एन एम्बिग्यूटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 25 एक्सेट्रा, इन आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 30 में देयर इज सम एम्बिग्यूटी. सो हाउ विल यू इंटरप्रेट दैट? You will interpret that on the basis of
principles of secularism and equality. And ultimate purpose of all that is what? Fraternity. So any such interpretation of these articles which results into or rupture the principles of fraternity in the Indian society, a breakdown of the principles of fraternity, that cannot be allowed. Similarly, here also social justice is the key concept on which these articles are built up. And any interpretation of these articles, if that goes on to violate the principles of social justice, natural justice, rule of law, etc., that interpretation will not be permissible because it goes on to violate the basic structure. And any interpretation which violates the basic structure will not be permissible. और सोशल जस्टिस का लार्जर पर्पस क्या है? फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. किसी भी कॉन्सेप्ट का अल्टीमेट पर्पस तो फ्रेटर्निटी है. And therefore any such interpretation of these provisions which results into a breakdown of the concept of social justice and fraternity, that will not be permissible. So this is the key to the interpretation of these articles. So write down the concept of social justice aiming at promoting fraternity and thereby assuring unity and integrity of the nation and dignity of the individuals, lies and dignity of the individuals, lies at the core of the right to equality, manifest under Article 14, 15, 16. The rule of interpretation clearly suggests that only that interpretation shall be adopted which serves the larger purpose of the provision. And therefore, while interpreting 14, 15 and 16, the principle of social justice, natural justice, rule of law, etc. shall be the main guiding principles. Any interpretation derogating means नीचा दिखाना, वापस नीचे आना, derogate करना. Any interpretation derogating from these principles will not be permissible. Any interpretation derogating from these principles will not be permissible. So that should be the rule of interpretation. Now we start with Article 14. Article 14 talks about the right to equality. But जो interpretation है Article 14 का या 15, 16, that interpretation cannot leave out the concept of social justice. If any kind of interpretation of that article you want to do, then you have to do interpretation in such a manner that it will promote the principles of natural justice and the principles of social justice. So आप अगर कोई भी ऐसा interpretation करते हो जो social justice के against जाता है, then that interpretation will be unconstitutional. So that is what we say, that all the articles are having overarching principles, mainly the fundamental rights and DPSP. And for the Article 14, all the principles are overarching, but mainly the most dominant out of them overarching principles is the principle of natural justice, social justice and rule of law. So ये जो principles हैं, these are the overarching principles of the Article 14, 15 and 16 as well as Article 21 etc. But we are concerned with Article 14, 15, 16 right now, and therefore they cannot be violated. We cannot derogate from these principles in any circumstances. तो जब भी आप doctrine of reservation वगैरह पढ़ोगे, this all we are studying is the background of that. क्योंकि जब डॉक्ट्रिन ऑफ रिजर्वेशन हम पढ़ते हैं, कई बार सोच के लगता है दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट अगर सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, हाउ कैन इट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इनफैक्ट आर्टिकल 16 4A एंड 4B जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड रूल है एंड इन विच द प्रमोशंस टू SCs एंड STs है, कैरी फॉरवर्ड रूल है, दैट इन द नागराज केस द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड द Supreme Court held it the constitutional. That amendment is not violating of the principle of the natural justice
and therefore it is constitutional. So that is the extent to which the court goes in interpreting these articles in the light of the principles of the social justice. Let's see the Article 14. The state shall not deny to any person the equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. The state shall not deny, not deny. So first thing you have to absorb is state shall not deny. The first thing is the restriction applies upon the state. And they are saying shall not deny means the language is negative, means this article is having a restrictive purpose. Please keep going on writing all these things. The article has the restrictive purpose. Restrictive means what? Restrictive means it limits the power of state. It has got the negative purpose, that is the restrictive purpose. It limits the power of state. And another thing that this article is applicable against the state. अब स्टेट किसको मानोगे? स्टेट मानने के लिए you have to look the article 12. We will see it later. Shall not deny means article having a negative language, that is in the form of restriction on the power of the state. और shall का क्या मतलब हुआ? Shall means it is mandatory. It is mandatory upon the state that the state shall not deny to the individual's right to equality. Not deny means negative, shall means mandatory upon the state, mandatory upon a state, and state, you understand the state, that what state means the prohibition applies upon the state, not directly upon the private individuals, upon the state. अब स्टेट लॉ बनाकर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट जो डायरेक्टली आर्टिकल स्टेट पे लगेगा. लेकिन फर्दर क्या कह रहे हैं वो? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दे आर यूजिंग टू फ्रेजेस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. सो देयर आर टू फ्रेजेस in Article 14, equality before the law, equality before the law, equal protection of the laws. Now what is the implications of these two phrases? Equality before law means the same privileges, benefits given to all individuals. Then equal protection law, it means special privileges can be given to a class. Then इसमें एक आएगा लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द लॉ. मैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हुएवर. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में एक और कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज इक्वलिटी अमंग इक्वल्स. देयर हैज टू बी इक्वलिटी अमंग इक्वल्स एंड नॉट अमंग अनइक्वल्स. और इधर से ही लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशंस की बात चालू होती है. In this phrase, the word law is used in the form of common noun. For example, जैसे एक a cow, उसी तरीके से law शब्द का law word का यूज हम common noun की तरह इधर इस phrase में कर रहे हैं. The word law is singular and using here as a common noun. जैसे the cow, a man. The word man is a common noun. Similarly, the word law बहुत सारे होंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर common noun की तरह कर रहे हैं. Means laws existence as existence in the country in general, so it applies to any law. जब हम कहते हैं law, तो word law हम एक general context के टर्म में बात कर रहे हैं. One thing is very clear कि equality before law में, equality before the law में, the concept of the rule of law is implicit. That concept was given by Dicey in England. So rule of law is the most important principle, and that is found in implicit in equality before the law. Rule of law means what? Law is supreme and not the individual. जैसा अभी बताया था कि लॉ इज सुप्रीम एंड नॉट द इंडिविजुअल, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर एक कोई लॉ के अंदर है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं हो सकता. हाँ, लेकिन स्पेशल प्रिविलेजेस
अगर लॉ देता है किसी को, किसी कारण से उसको वो स्पेशल प्रिविलेजेस उसको जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रिविलेजेस क्यों हैं? क्योंकि लॉ ने वो आपको प्रिविलेजेस दिए थे। अगर लॉ आपके वो प्रिविलेजेस छीन ले, you will not have those privileges. So basically the point is, rule of law means what? The law governs and not the individual. And therefore no individual can rise above the law. Even if it is the President of India or the Supreme Court of India, neither of them can rise above the law. So all the persons, Parliament, Lok Sabha, all of them, or any of the persons, all of them have to function within the broad domain and limitations of law. So rule of law, it means that is the law governs and not the individual, and that we have discussed in B.R. Kapoor case. That is the theory of guided principles, that even if we are given the discretionary powers, your power has to be exercised only under the broad domain of the constitution. You cannot violate the constitution. And we have talked about the theory of guided powers. So कोई भी व्यक्ति गवर्न नहीं करेगा, लॉ गवर्न करेगा व्यक्ति के माध्यम से. Even if it is Prime Minister of India, he is not governing. Actually the law is governing, and he is agent of law because he has chosen the Prime Minister of India. So he is also subservient to the law. So that is the idea of law, कि law से ऊपर कोई नहीं. Rule of law पर बिहार में there could be asked a short note question in the बिहार judiciary, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक्स हैं उसमें रूल ऑफ लॉ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो यू कैन फाइंड मोर फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, डाइसी के बारे में ऑल दिस. बट लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है रूल ऑफ लॉ का कि बी आर कपूर में जो पॉजिटिव मॉरलिटी वगैरह था, दैट इज ऑल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, द थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर्स. नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है दैट देयर कैन नॉट बी एनी अनगाइडेड पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और वायलेटिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपका थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म व्हाट इज दैट, ये पढ़ चुके हैं हम. मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट द इंडिविजुअल, एंड इट इज गाइडेड बाय फाउंडिंग प्रिंसिपल्स of the constitution, guided by the principles which are the founding principles of the constitution. So all are the manifestations of the principles of rule of law. जब आप रूल ऑफ लॉ में आंसर लिखते हो तो डाइसी ने क्या कहा था वो तो एक छोटे पैराग्राफ में आ जाएगा, लेकिन द मोर इम्पोर्टेंट इज दैट द मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट इन द फॉर्म ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, in the form of the concept of the positive morality. We will put all of them together and present a very good answer that will make you differ from others, especially for बिहार जुडिशरी, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. सो एक ये एरिया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दूसरा एरिया है जिस पर डायरेक्ट सवाल आ सकता है. सेपरेशन ऑफ पावर्स तीसरा एरिया है जहाँ पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. अब इक्वालिटी बिफोर लॉ में देयर हैज टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन. Means state cannot discriminate between individuals on any grounds unless the ground is justifiable. अगर justifiable हुआ, for example जैसे sex could be the ground on the basis of admission in boys school or girls school, but otherwise आपके आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में, 16 क्लॉज 2 में और 29 क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा है that on the basis of following criteria the state cannot discriminate. जब आप ये आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि आप कुछ केसेस में, हर केसेस में नहीं, कुछ केसेस में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर आप नहीं कर सकते. So that is what manifestation of the principles of equality. Equality before law means what? The law will govern and individual will not.
and no individual is above the law. And number 2, law will treat everyone equally. हर व्यक्ति लॉ की नज़रों में बराबर है, तो कोई व्यक्ति किसी धर्म, जाति या रेस को बिलोंग करता हो, उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. So that is where it is restrictive, that state shall not discriminate. So it is called that equality before law is the negative concept, because it is state shall not discriminate. Equality before the law is negative concept, and equal protection of the laws is positive concept. So that is the restrictions upon the power of the state, that is negative concept. And equal protection of laws makes a positive kind duty upon the states, that it shall treat equals equally. And since it is a positive duty, so you will call it a positive concept. And when we talks about the equality amongst equal, that will lies in both phrases, but it will more importantly arise in this phrase, equality amongst equal. Equality amongst equal means what? That there has to be equality before the law. When you say equality before the law means what? Who can be treated equality before the law? Only who are equals. Suppose you and me are equals. अगर equal है तो unequal treatment नहीं होगा. But suppose me and Mr. X are unequal, then how could you treat us equally? When they are writing the equality before the law, तो उसी में implicit है equality before the laws. You cannot say कि laws उधर है and here is only law. They in no doubts they are using it in the singular sense, but singular always connote plural also. So singular always connotes plural also. And when you read it like this, equality before the law means you are talking about the individual specific laws. You talk about the IPC, you talk about the FERA, you talk about the FEMA, you talk about the Dowry Prohibition Act, any law of that matter. इसलिए हर individual law जो है उस law के सामने that law treat all people equally. So हर एक law treat the individual equally, every person equally. But then again, every person does not fall within the domain of that law. Every person will not be equal with respect to that law. For example, IPC को अप्लाई करेंगे हम, that would apply upon criminals. कोई आम आदमी पे तो लगेगा नहीं जिसने क्राइम नहीं किया है. जब तक कोई व्यक्ति क्राइम ना करे तब तक उस पर आईपीसी नहीं लगेगा. लेकिन मान लो दो लोगों ने, ए और बी बोथ, दोनों ने मर्डर कर रखा है, देन विल यू नॉट अप्लाई सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड अपॉन बोथ, अपॉन देम, ए एंड बी. अब दोनों ने ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर काइंड ऑफ मर्डर कर रखा है. विल यू नॉट गिव डेथ सेंटेंस टू बोथ बिकॉज दे आर बोथ मर्डरर्स ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर काइंड and we are innocent people, we have not done any crime, then why should we brought into the court of IPC? So IPC का जो पर्पज है, IPC के अलग अलग डोमेन में जो फॉल करेंगे, they will be treated equally. But the persons who are not criminals, why should they be fall into the domain of the IPC? उन पर IC क्यों लगाओगे? Similarly, the Dowry Prohibition Act, अगर उसका एग्जाम्पल लें तो इट विल अप्लाई ओनली टू दोज पर्सन्स जो दहेज दे रहा है या ले रहा है, इन्वॉल्व इन दोज मैटर. अब जो ले ही नहीं रहा तो हाउ दिस एक्ट विल अप्लाई ऑन दोज. अब सपोज फादर वांट्स टू गिव हिज डॉटर समथिंग, दैट इज गिफ्ट टू हर डॉटर और एनीथिंग, बट व्हाई टू द फैमिली ऑफ द बॉय. So that is between the daughter and father. It will not fall under the dowry prohibition. So there are so many such laws, particular individual laws. When the word equality before the law is there, तो word law में laws as add हो गया. So this phrase suggests that
this equality before law apply upon with respect to the individual laws also. So first of one is the rule of law in this phrase, then no discrimination, then equality amongst equal, third one. Because when you say equality before the law, so obviously equality किसके बीच? Equality individuals के बीच, क्योंकि जनरल सेंस में हम रूल ऑफ लॉ और नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो लिख ही चुके हैं। अब उसके अलावा और क्या, एक लॉ का जो पर्पस है उसके पर्पस के डोमेन में जितने व्यक्ति आएंगे उनका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे डॉरी प्रोविजन एक्ट में जितने भी डॉरी वाले व्यक्ति आएंगे, देने लेने वाले व्यक्ति आएंगे, उनके बीच इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में जितने भी लोग आएंगे उनका उस सेक्शन में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 379 में अगर थीफ है कोई, 5 व्यक्ति हैं और सेम तरह के एक्ट हैं, सेम तरह की चोरी करिए, सेम तरीके सब कुछ सेम है, तो उनका पनिशमेंट के लिए सबको सेम तरीके से ट्रीट करो एंड गिव देम द सेम पनिशमेंट, सो दैट इज द इक्वल ट्रीटमेंट amongst equal. But suppose if I have not committed the theft, then why should you bring me under section 379 of Indian Penal Code? So that is equality amongst equal. So this is where you have the equality among equals. अब यहीं पे जो आपका कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन will also fall. अब इसका मतलब ये नहीं है it will not fall in equal protection of the laws. We are not talking about this phrase, we are talking about this phrase. अगर देखो तो दोनों एक दूसरे के मिरर रेप्लिका हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को आमने सामने कर दो तो दोनों में सारी बातें सेम होंगी, बट देखने का नजरिया अलग होगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द रूल ऑफ लॉ, दैट इज लॉ इज सुप्रीम एंड नॉट द इंडिविजुअल, ये हमने देख लिया रूल ऑफ लॉ में। देन वी हैव टॉक अबाउट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन, that you cannot discriminate between the individuals. You have talked about the equality amongst equals, means legislative classifications etc. अब ये सब है, ये हमारा it is all in the narrower sense. narrower मतलब individual, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करोगे, means you will not discriminate between two individuals. Every individual who is similarly situated shall be treated equally. So this is equality amongst individuals. Me and you treated equally. Me and you not discriminated with each other, and so forth. Law is not above me and you. We are under the law. So ये जो 3 dimensions हैं, these 3 dimensions are called the narrower aspect of the concept of equality. And there you will say it is more negative. More negative means it is more restrictive in nature, and you can say that it is dealing with the concept of individual equality, individuals के बीच equality. लेकिन इतने से क्या हमारा सोशल जस्टिस का पर्पस सॉल्व हो जाएगा? और इतने से अगर सोशल जस्टिस का पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोशल जस्टिस के लिए इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। फॉर द सोशल जस्टिस देयर आर सेवरल ग्रुप्स इन द सोसाइटी विच आर डाउन ट्रोडन एंड विच आर सोशली सफरिंग, मे बी बिकॉज दे आर लेसर क्लासेस, एंड देयरफॉर यू हैव टू मेक लॉज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, एंड दैट इज वेयर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी फंक्शंस. You see, one was the negative aspect, that is rule of law, non-discrimination, equality amongst individual, that is equality among the equals. So that we have understood. Now what about the positive aspect? What we have to understand is, if you interpret this phrase equality before the law, this phrase equality before the law, in light of the actual purpose and the larger overarching principles, social justice, so merely guarantee individual justice will not solve the purpose. In the Indian society, there are per se existing circumstances which results into automatic inequalities. For example, talk about poverty, garibi. Poverty is one situation
or one circumstance which automatically results into inequality between the rich and the poor. It is the automatic divide into the society which results into suffering to the poorer classes. Similarly, you talk about the socially backward classes. I am not saying the economical backward, it is socially backward classes. The classes which are looked down upon because they have been considered to be socially backward, so they have been suffering. So the existence of the lower caste and the higher caste in the society, that is also one automatically existing circumstance which results into social injustices and inequality. Similarly, you talk about the classifications of old persons. जो व्यक्ति आज जवान है, यंग एज है, वो कभी ना कभी ओल्ड एज का होगा कुछ साल बाद. जो ओल्ड एज में आज है वो कभी जवान होगा किसी टाइम पर, अपने टाइम पर. इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति बच्चा है वो भी ओल्ड होगा किसी टाइम पर. सो देयर इज अ क्लास ऑफ ओल्ड पर्सन्स. सो इट इज ए नेचुरल फिनोमेना एंड ओल्ड एज एक रियलिटी है. तो ओल्ड एज में सफरिंग्स भी होते हैं. You lose your income, maybe after a particular age you will not work, your health problems and so many things. So old age भी एक criteria है, एक factor है जिसकी वजह से inequalities are there. A person of old age cannot do such physical activities as a young person, except some who are healthy. So this is there are various activities which can be done by the young but cannot be done by the olds. So this is an automatic difference in the society. So ultimately, do not there is a need of doing something positively for the old persons, old age persons. Similarly, अगर कोई एक बच्चा है, that is automatically a unequal circumstance. A child can be easily exploited. सिर्फ हम इधर डाउन ट्रोडन को अपलिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे. Here we are talking about in the larger scale. You talk about male and female. A woman per se, because of her sexual make, she is a sexual vulnerable class when we talk about the sexual offenses. A man may also be subject to sexual offenses, but we are talking about the society like in India, woman is more vulnerable and therefore it is required some extra protection for those female class. It is required by the state to take some extra step for the protection of them. So इसी प्रकार से समाज में विभिन्न असमानता हैं. Inequalities are there. Inequality is not prospective with people are being downtrodden, people being made to suffer because they are backward. So inequalities are not only to that extent. It is so many things in your day-to-day life में you will see. उसी प्रकार से लेट्स से एन एग्जांपल, जो रिक्शे वाले होते हैं इन मेट्रो सिटीज, दे आर नॉट हैविंग द हाउस टू लिव. वो क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा में ही सो जाते हैं या फिर दे विल स्लीप एट द फुटपाथ्स, और साइड से गाड़ियाँ जाती हैं और अगर रात में कोई करवट ले तो उस फुटपाथ पे से लुढ़क कर सड़क पर आ जाए एंड दे विल डाई. और कई बार तो ऐसे केसेस हाईलाइटेड केसेस कि अपनी रात को कोई लिक्वर पी के आ रहा है, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी एंड दे आर रोइंग, उनको कुचल दिया गया. सो दे आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सेपरेट क्लास इन देमसेल्व्स एंड डजंट द स्टेट नीड समथिंग टू डू फॉर देम. Similarly, talk about the slum areas in the metro cities. They are not having the basic facilities of water, electricity, etc. फिर भी उसमें रह रहे हैं because they are not having a space to live. So don't these slum areas people have right to have the basic facilities for themselves? They came from the rural areas for work to the urban areas because they are not having the job opportunities at their native place, home place. They migrated here and live here and they are not having enough money to buy a house and therefore they finding any place and staying there, and gradually by the period of time it takes a shape of slum. So either you stop the migration, which you cannot, constitutionally you are not permissible. Then if you cannot stop the migration, then you have to provide more place
and you have to provide cheaper houses so that the development of slums could be stopped. So in that ways you can think about the hundreds of situations in the society every day. It is not only about the downtrodden peoples. It is not only about reservations. Similarly, you can talk about the young person's vulnerability जिसके पास job नहीं है, he is jobless, enough qualified, या फिर किसी ऐसी job को कर रहा है वो that is he is over qualified for that. Similarly, discrepancy उन जगह पे भी है, एक सेम डिग्री लेने के लिए you are studying from the different college. One a student studied from a reputed college like for BTech IIT, and another student studied from a private institute, BTech institute, and the person from IIT got the job, but not the student of a private college not get the placement. So discrepancy उधर भी है. So there is a discrepancy in the standard of education. अब उसमें एडमिशन किसी को अपॉर्चुनिटीज मिली कोचिंग वोचिंग की तो आईआईटी में एडमिशन हो गया, किसी ने मेहनत की, कोई नहीं पढ़ पाया, उसको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली तो वो प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ पाया. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द रोड्स, देयर आर वंडरफुल रोड्स और एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, नेशनल हाईवेज एट सर्टेन प्लेस इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, एंड एट द रिमोट एरियाज उधर ही कुछ लगे हुए 2 किलोमीटर दूर ही ऐसी ऐसी रोड्स भी हैं इतनी ऊबड़ खाबड़ और टूटी हुई कि 1-2 किलोमीटर चलने में ही आप काफी परेशान हो जाते हो. इज इट नॉट द डिस्क्रिपेंसी इन मेकिंग रोड्स ऑल्सो? सो इज इट नॉट द injustice to the people staying there in that locality? Similarly, you talk about the places where the electricity supply or water supply is very less in metro cities only, the area of slums like. So that is also again a discrepancy. So when you talk about the equality, then the equality has to be seen in the positive context, in the positive sense, from all perspectives. It is not only about upliftment. उसके लिए तो आर्टिकल 15-16 है, लेकिन इक्वालिटी फ्रॉम ऑल प्रोस्पेक्टिव्स अगर आप आर्टिकल 15-16 पढ़ोगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दे रखा है आर्टिकल 15 में, और 16 में दे रखा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट. ओल्ड एज पर्सन के लिए 15-16 में कुछ भी नहीं है, चाइल्ड और वुमेन के लिए 15-16 में है, 15 क्लाउज 3 में है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कवर्ड है. नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट 6 क्लाउज भी ऐड हो गया, दैट इज फॉर इकोनॉमिक क्लास ऑल्सो. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी जगह मिल गई है इसमें आफ्टर द अमेंडमेंट इन आर्टिकल 15. इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिकल, सोशली बैकवर्ड, all classes are covered, but other things are not covered in 15-16 like roads, farmers. फार्मर के साथ जो होता है ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज एंड बेमौसम बारिश वगैरह, ओलावृष्टि, सूखा, they have to suffer a lot. So don't they have the right to have the compensation or timely compensation? If the government earns so much from the exports of the products which are produced by the farmers, doesn't the government have the duty to compensate these farmers from the losses? Similarly, स्पोर्ट्स कोटा में जो एडमिशन मिलता है, कॉलेजेस में नौकरी मिलती है, सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर गिविंग देम रिजर्वेशन? दैट यू आर एक्टिव इन स्पोर्ट्स, यू वर नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू स्टडी, क्योंकि कोई बच्चा एंटायर टाइम इज गिविंग टू देयर स्पोर्ट्स एंड अचीविंग टू द मेरिट्स इन द स्पोर्ट. वो स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक जाता है. अगर स्कूल डेज में अगर स्पोर्ट्स में एक्टिव है कोई बच्चा, तो कॉलेज में जाना, उसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला और उसको जाना है, और सो उसके मेरिट में इतना नंबर कम है, तो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग द कोटा. सो स्पेशल कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा जो दिया जाता है, वेदर ही इज बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल डेवलप्ड और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और सोशली डेवलप्ड और सोशल बैकवर्ड क्लास, उससे फर्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो देयरफॉर यू आर गेटिंग रिजर्वेशन, 1-2 सीट्स दे आर रिजर्विंग फॉर देम. सो स्पोर्ट्स कोटा का रिजर्वेशन विल नॉट फॉल अंडर 15-3 और 15-4 और 16 आर्टिकल 16. सो इनको 15-16 में नहीं मिलता तो कहाँ पर मिलता है रिजर्वेशन? दैट इज आर्टिकल 14. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट आर्टिकल 14 is the reservoir of all
positive steps taken by the state, and some dimensions are explicitly covered by Article 15 and 16. For example, जैसे old age का हमने देखा था, old age peoples are not lies into Article 15, 16. He is not socially or economically or backward classes. They are of old age. उनको रिजर्वेशन में जो मिलता है, ओल्ड एज पेंशंस मिलती हैं, ऑल दीज बेनिफिट्स where he will get the benefits under Article 14. So when you talk about the equality before the law in Article 14, there are positive aspects also there. The positive aspects basically related to the state taking positive steps, and state took positive steps by two ways, by two things. Number one, to take positive action to uplift or provide remedy in all situations of inequality. Not only to uplift but also provide remedy in all situations of inequality. चाहे वो जो भी सिचुएशन ऑफ अनइक्वालिटी हो, उसमें रेमेडी प्रोवाइड करना. प्लस सेकंड वन इज द स्टेट ऑल्सो टेक पॉजिटिव एक्शन इन रिमूवल ऑफ दोज सर्कमस्टेंसेज विच क्रिएट दोज डिस्क्रिपेंसीज. सेकंड स्टेप में स्टेट को ऐसा कार्य करना जिससे वो डिस्क्रिपेंसी जिससे क्रिएट हो रही है उसको वो ही हटा दी जाए. फॉर एग्जाम्पल एक तो हो गया कि आप डाउन ट्रोडन हैं, अब बाय अमेंडमेंट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस भी हो गए, उनको रिजर्वेशन देकर जॉब में ला रहे हो. एक तो फर्स्ट में तो वो हो गया फर्स्ट स्टेप में. अब दूसरे स्टेप में वो डाउन ट्रोडन क्यों हैं वो भी स्टेट एनालाइज करेगा. शायद बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, सो वॉट एवर. तो उस एरिया में एजुकेशनली जैसे है तो एजुकेशन एरिया में भी आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. अगर सोशल बैकवर्डनेस की वजह से तो सोशल बैकवर्डनेस भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो. सो हेयर द पुश एंड पुल थ्योरी विल अप्लाई. यू आर पुशिंग देम इन द फर्स्ट स्टेप, यू आर पुलिंग देम अप by giving the reservations or whatever the benefits, and in second step you are pushing them upwards. So state is expected to work in two folds. One is by removing those circumstances which results into the discrepancy wherever it is possible. अब ओल्ड एज को तो आप खत्म नहीं कर दोगे. और दूसरा, टू प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स टू सच ग्रुप्स which require those benefits, and that will not be called unequal treatment. अब आप किसी बैकवर्ड क्लास को या फिर चिल्ड्रन क्लास को या फिर वुमेन क्लास को, फीमेल क्लास को आइडेंटिफाई करके क्लास की फॉर्म में, इफ यू आर आइडेंटिफाइंग एज them as a class and you are doing some special benefits for them, then the others cannot say that you are doing discriminations and giving benefits to them and also gives same benefits to us also. Why? Because these class are constituting some kind of vulnerable class in comparison to the others. They constitute some special class who otherwise, if special protection is not given to them, it amounts to inequality and injustice to those groups would be done. So you need to uplift them, you need to give extra support to them so that they will become equal to the others. There are certain vulnerable classes like there are discrepancies in male and female. So female की discrepancy को हम दूर नहीं कर सकते. So what we can do? We have to took some positive steps for their security. Create some special protection for them. You can have more cameras, more police officers. Cameras should be monitored. Some kind of gadgets or apps that can be used for protection of them by the state. So vulnerability is an inequality. अब 15 क्लॉज 3 में है कि वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आर्टिकल 15 और 16 में फॉल नहीं करेंगी, फिर भी आपको रिजर्वेशन या स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है. वाई? बिकॉज दैट इज इन अंडर आर्टिकल 14. इट इज इन आर्टिकल 14.
what I want to tell you is that वो जो special positive steps by the state हैं to do that equality that are all in Article 14. अगर आर्टिकल 15, 16 नहीं भी होते फिर भी आप वुमेन को स्पेशल रिजर्वेशन दे सकते थे, प्रोटेक्शन दे सकते थे, नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकते थे, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन दे सकते थे, फिर भी कॉलेज में रिजर्वेशन मिल सकता था बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 14 अलोन. It is the matter of fact just to make it more clear, to make more clearly visible that they have created certain things or they have carved out certain things from Article 14 and put them in Article 15 and 16. And whatever which is not in 15 and 16 that is still in Article 14. तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर 15, 16 नहीं भी होते तो जो भी चीज़ 15, 16 में है वो आप फिर भी आर्टिकल 14 में कर सकते थे, और जो भी चीज़ आपने निकाल कर 15, 16 में रख दी, लिख दी, सो दे आर द डायमेंशंस ऑफ आर्टिकल 14 explicitly written in the article 15 and 16. But whatever does not fall in article 15 and 16 still is hidden in article 14, and whatever positive steps you want to take and it is not written in 15, 16, still you can take it in article 14. So in article 14 the negative aspects are 3, and the fourth is proactive action by the state with respect to doing larger social justice. Proactive action by the state for the purpose of doing larger social justice. It is proactive action by the state in respect of anything. It is not for the upliftment of the backward class. That is only one dimension, just one small dimension. हालांकि उसका मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा है. आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो कि स्टेट कितने सारे एक्शंस ले रही है. फॉर एग्जांपल नरेगा, जवाहर योजना, आधार कार्ड से रिलेटेड. अब तो वन नेशन वन आधार का वो राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम भी अप्लाई होने वाला है. These are all for the doing of social justice only. किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, बीपीएल कार्ड बनाकर जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है. So equality before law has 3 negative dimensions, that is 3 restrictive dimensions and 1 positive dimension. 3 negative dimensions हैं इसमें और एक positive dimension है. देखो रियल सेंस में इक्वलिटी तो तब आएगा जब सबको बराबर सब कुछ मिले. तो रियल इक्वालिटी मीन्स जब आप सबको बराबर रखोगे और सबको बराबर ट्रीटमेंट दोगे, ग्रुप्स को भी. अब देयर आर मैनी पीपल, फॉर एग्जांपल से एससीज, एसटीज, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर लिविंग इन आइसोलेटेड जंगल एरियाज. they have got their own culture and everything they have is distinct. They will not like to move into the mainstream. We cannot say that they are socially backward, they are socially isolated. We cannot say that they are economically backward. They may be very rich also. Not in terms of currency notes, but in terms of resources, yes, they may be. So, what is the special treatment required for them? The special treatment is to bring them into the mainstream without disturbing their cultural heritage, without disturbing their culture practices. अगर वो कर सको, that is the special treatment for them. Scheduled caste generally are considered to be the groups who are to need to be suffered into the past because of the atrocities by the superior classes, and therefore they need a different kind of attitude. ये आइसोलेशन वाले लोग नहीं हैं, वो मेन स्ट्रीम में ही थे बट उनको दबाया गया है. and therefore they need to be uplifted, and therefore you provide direct reservation for them. जो रिजर्वेशन हम एसटी में एसटीज को देते हैं वो इसलिए नहीं कि उनको अपलिफ्ट करना है, लेकिन इसलिए जिससे वो मेन स्ट्रीम में आ सकें. एससीज को देते हो क्योंकि वो अपलिफ्ट हो सकें, जिससे वो अपलिफ्ट हों. ओबीसीज का भी वही केस है, एंड सो फोर्थ. सो अलग अलग पर्पज से, अलग अलग एटीट्यूड से आप रिजर्वेशन दे रहे हो. वाई? बिकॉज दीज ग्रुप्स आर बैकवर्ड and you have to uplift them and you have to bring them into the mainstream to make equal to the other classes. So equality before law में there are two dimensions. First is individual dimension, that is equality between the individual, and second is group equality,
Group equality is the positive aspect, and individual that is negative aspect. इसमें तीन चीज थी. फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, देन अदर वन इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, एंड थर्ड वन इज इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. अब आपको इतना डिटेल में नहीं करना जो लॉ फैकल्टी में पढ़ाया जाता है. अब नाउ द ग्रुप इक्वालिटी इज बेसिकली द पॉजिटिव एस्पेक्ट in which the upliftment is there, maybe uplifting the downtrodden, plus apart from that for any other group positive action, जैसा कि हमने देखा था ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, विमेन एक्सेट्रा. अब काफ़ी लोगों को लगता है कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिजर्वेशन, दैट इज अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ओनली, अंडर दिस फ्रेज ओनली. But when you go by the Supreme Court judgments, when you go by the actual judgments of the Supreme Court, the court is not differentiating between this phrase and the other phrase. The concept of reservation is here also. And the reason being, अगर आप इन तीनों चीज़ों को सिर्फ मानते हो कि ये तीनों चीज़ ही इक्वालिटी बिफोर द लॉ में है, देन द सोशल जस्टिस का जो लेटर कॉन्सेप्ट है, सोशल जस्टिस का लेटर कॉन्सेप्ट, which is the essence of Article 14, and therefore it is the essence of both the phrases. और अब जब ये essence है आर्टिकल 14 का और दोनों इसी वजह से दोनों फ्रेज का essence हो गया है, then where you have done the social justice, आपने इंडिविजुअल जस्टिस तो कर दिया, रूल ऑफ लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, you are doing individual justice, but where are you doing the social justice? Equality before the law incorporates, and essentially it incorporates not only the individual justice, also the justice between the groups. For example, suppose there are three groups, considering three groups, and this group is having development of this level up to this level in the, and this second group is lower than this lower level, and third group is also more lower than this, and now you are talking about doing equal treatment of all. तो जब तक आप इन दोनों को बराबर यहाँ तक नहीं उठाओगे तो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इन दोनों ग्रुपों को इक्वल नहीं उठाओगे तो, बिकॉज इट इज पर से एन अनइक्वल ट्रीटमेंट. वन ग्रुप इज एट द लोअर लेवल. अब लोअर लेवल वी आर नॉट सेइंग only the socially lower level, it can be educationally lower level, or it can be age wise lower level, it can be old age woman or child, anyone that kind of group. जैसे हमने स्पोर्ट्स का एग्जांपल लिया था, तो स्पोर्ट्स पर्सन नॉट गेट दैट मच टाइम टू स्टडी बिकॉज ही और सी इज इन स्पोर्ट्स, वर्किंग हार्ड इन स्पोर्ट्स. सो उसका भी एक ग्रुप है जो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन पे है, not because they are not capable of doing the study, but because they spend time on the sports. और जब तक उसको आप बराबर लेवल पर नहीं लाओगे, बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, हाउ कैन यू से दैट द रियल जस्टिस हैज बीन डन? सो सोशल जस्टिस के प्रोस्पेक्टिव से, फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सोशल जस्टिस, इट इज नॉट ओनली द इंडिविजुअल जस्टिस, rather the upliftment and equal treatment of these group also. So that is implicit in the phrase equality before the law, and that is implicit in the phrase equal protection of the laws also. So उस phrase को तो हम बाद में देखेंगे. First of all, write about on this phrase. So write down the phrase equality before the law has in it two broad concepts. The phrase equality before law has in it two broad concepts. First one is individual justice or equality, and the second is larger group equality. Now write down about the first, that is individual equality. इसमें बिहार वगैरह के लिए कुछ आप डाइसी वगैरह का जो ऐड कर लेना बुक से, उसके लिए, बिकॉज बिहार में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो बाकी कॉन्सेप्ट है, राइट इट. इंडिविजुअल इक्वालिटी में फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ.
This concept means that it is the law which is supreme and not the individual. That is, all individuals have to be governed by law, and no one is above the law. Next sentence, even if there are special privileges given to some individuals because of their rank and post, those privileges are to be those which are conferred by the law. जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो इस वजह से नहीं है बिकॉज दे आर अबव द लॉ, बट द लॉ itself grant those privileges to them because they hold those positions. Yes, so special privileges उनके लिए इस वजह से हैं क्योंकि लॉ ग्रांट करता है, not because you are superior to the law. This concept is related to the principle of natural justice also, and the idea is that it will be inequitable and unjust to allow any individual to rise above the law. Even in the Constitution, if discretionary power are given to a functionary, the purpose is not to give him a status above the law. Rather, even such discretionary power have to be exercised subject to essential spirit of the Constitution. It is here the concept of guided power and concept of positive morality applies. तो इस पे तो कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेड पावर और मॉरलिटी पे तो आप और भी लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो. वेयर विच केस वुड अप्लाई, बी आर कपूर वाला केस इसमें मेंशन कर सकते हो. सो एग्जाम में पूछते हुए कभी डिटेल करो तो आप, इट इज़ वन डायमेंशन. अब डाइसी ने क्या कहा था रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश लॉ, दैट यू ऑलवेज हैव टू राइट. अब डाइसी गिव द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ rule of law in the context of English Constitution, and main idea was no one can above the law, and that is very burning principle everywhere. Now write down the second point. Second point is for the non-discrimination. About the non-discrimination. Uh, individual justice also requires that the state shall not discriminate between individuals on any such ground which is unreasonable. अब why I am using the word unreasonable? Because बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिस पर डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं. जैसे आप याद करो आर्टिकल 29 क्लॉज 2, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स यू कैन डिस्क्रिमिनेट, जो एग्जाम्पल लिया था हमने बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल वाला. देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑन विच द डिस्क्रिमिनेशन इज परमिसिबल, but there are certain grounds which are unreasonable for discrimination. Race, caste, religion, school में admission, sex also excepting the cases where it is exclusively for boys or girls college या school. उसके अलावा अगर discrimination करते हैं sex के basis पे, that is also unreasonable. अगर कोई co-ed educational institution है उसमें discrimination, that is unreasonable. Place of birth, in certain cases it can be a kind of discrimination, and in certain cases it is cannot be a kind of discrimination. जैसा कि उत्तराखंड जुडिशरी में जो एग्जाम होते हैं उसमें जो गर्ल्स डोमिसाइल्ड इन उत्तराखंड उनको रिजर्वेशन दे रखा है, सो उनका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है बिकॉज दे गॉट मोर प्रेफरेंस. So in that way you see that it is discriminatory, but in order to promote the local girls of Uttarakhand, they have got that policy, and this is not unconstitutional. So this policy is also for the promotion of local interest. So in that way there may be such discriminations which are positive discrimination for the furthering of interest of some groups. So that way it will be allowed, but in general discrimination on the ground of race, caste, religion, sex, etc. is not allowed, is not permissible. अब उसके लिए आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे. And in these you will see that the grounds on which you cannot discriminate that are mentioned in these articles. Now the third one, equality amongst the equals.
अब यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू द वर्ड लॉ इन दिस फ्रेज इज इन द प्लूरल law common noun, but you can always write the as laws, and therefore it will not include the law in general, it will include the specific laws also, and every law has got a purpose. अब वैसे तो इसमें अंडर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ओवर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव क्लासिफिकेशन, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन बहुत कुछ है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर जुडिशियरी प्रोस्पेक्टिव। ये एकेडमिक्स के लिए इन डिटेल में जरूरी होगा, बट नॉट फॉर द एग्जाम। सो वी आर एट द पॉइंट दैट इंडिविजुअल स्पेसिफिक लॉ इज हैविंग द स्पेसिफिक पर्पसेज। जैसे हमने आईपीसी का इंडियन पीनल कोड का एग्जांपल देखा था, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का एग्जांपल देखा था, and so forth. Every law is having a certain aim of preventing some mischief in the society. जैसा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, देन अनटचेबिलिटी प्रोविजन एक्ट, उसका पर्पज है टू स्टॉप द अनटचेबिलिटी, एट्रोसिटीज टू द एससीज एंड एसटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज टू एससीज एसटीज एक्ट। अब ये लॉ लगेगा हर उस व्यक्ति के पास जो एट्रोसिटीज करता है एससीज एसटीज के साथ। सो अगर हम एट्रोसिटीज नहीं कर रहे, वी आर नॉट फॉलोइंग अंडर द डोमेन ऑफ दैट लॉ। सिमिलरली फॉर आईपीसी वी आर नॉट डूइंग एनी क्राइम, so will not fall under that domain. Suppose take an example of theft, then if we have not done the theft, we do not fall into the purview of the theft section in the IPC. But suppose a person does the theft, he will fall under the purview of theft. X and Y does the theft, they will fall in that purview. So A और B तो theft नहीं किया उन्होंने, और X Y ने theft किया है, तो X Y fall करेगा in the purview of the theft, but A और B नहीं करेगा. So X and Y are not equal to A and B for the purpose of application of the law of theft, and therefore applying of the theft का law upon X, Y and A, B are not proper. So you have to find the first of all as to with respect to that particular law and the purpose of that law, as to who are the persons who will fall in the domain of application of that law. In this example, X and Y are fall in the domain of the 378 of IPC, and now when these X, Y are placed in the domain of 378, they should be treated equally. अब ऐसा नहीं कर सकते कि X को चार्ज से वैसी थेफ्ट के चार्ज से छूट दिया आर्बिट्रेरीली और Y को पनिश कर दिया, then it is unequal treatment. So once you make the classification between A and B and X and Y, and you find that the X and Y are fall in the category of thieves, then A and B have to treat it differently and they will not be punished, but X and Y has to be punished, so they have to be treated equally. जैसे हमने डोरी वाले एग्जाम्पल में देखा था, जिसने डोरी लिया है तो उसी को तो पनिश करोगे। अब जिसको डोरी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो why should he be kept into that domain and be punished? उस कैटेगरी में क्यों रखेंगे हम। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ए बी सी डी ई एफ, इन्होंने मर्डर किया है, अलग अलग मर्डर किया, एक साथ नहीं, अलग अलग मर्डर किया है, तो इनको 302 की कैटेगरी में रखेंगे, मर्डर की कैटेगरी में। और एक्स वाई जेड इन्होंने अलग अलग थेफ्ट किया है, तो इनको थेफ्ट की कैटेगरी में रखेंगे। दे आर टू बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ 379 की पनिशमेंट के लिए, और इनको 302 के पनिशमेंट के लिए कैटेगरी में रखेंगे इन 6 को। अब सपोज वाई को भी आपने मर्डर की कैटेगरी में डाल दिया, इज इट जस्टिफाइड? नो, वाई? बिकॉज वाई हैज नॉट डन द मर्डर, एंड देयरफॉर पुटिंग वाई इन दिस कैटेगरी इज नॉट जस्टिफाइड। एंड सपोज नाउ बी एंड एफ को आपने अगर बाहर रखा, बी एंड एफ को 302 की कैटेगरी में नहीं लेके आए और इन्होंने भी मर्डर किया है, then whether it is justified? It will also not justified, because once you find that they are falling into a particular domain of law, so these all are to be treated equally. अब सपोज इस ग्रुप में से 302 के डोमेन में से E and F को आपने you find out that they have done the murder in rare, which is falling under rarest of rare cases, but इनका जो किया हुआ मर्डर will not fall under rarest of rare cases, तो अब इनका डोमेन अलग हो जाएगा। इनको वैसे तो 302 के डोमेन में ही रखोगे, बट इनको आप डेथ सेंटेंस दोगे और इन 4 को डेथ सेंटेंस नहीं दोगे। सपोज से इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया। अब सपोज ई का केस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, बट उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया, डेथ सेंटेंस नहीं दिया, इज इट जस्टिफाइड?
justified? No, it is also not justified. So basically the point is, when the word law is used, equality before law, the word law includes plurality of laws also, means the specifically applicable individual law also, and every law is having a purpose. That law having certain persons falling in the domain of that applicability, because the purpose of that law will be served if you put these people in the domain of that law. And that is where you make a classification as to putting these persons into the purview of law which solve the purpose of law, and not putting these other persons will not do any injustice, because they have not done that act by which they fall into the purview of that law. So that is the reasonable classification. So reasonable classification means the classifying the persons for whom the law will apply and upon whom the law will not apply. The persons upon whom you are applying the law, they should have a reasonable connection with the ultimate purpose of that particular law. अब जितने मर्डरर्स हैं उनको 302 में डालोगे तो रीजनेबल कलेक्शन है कि नहीं? अगर थीफ को 302 में डाल दोगे देन दैट इज नॉट रीजनेबल कलेक्शन. सो जब भी आपको लॉ किसी पे लगाना है तो सबसे पहले पता करो हु आर द पीपल कंसीडर्ड टू बी इक्वल्स. अब अरिस्टोटल ने बहुत पहले ये सिद्धांत दिया था. सो राइट डाउन द कॉन्सेप्ट इज दैट द वर्ड लॉ इंक्लूड्स द plurality of laws also, and therefore it includes the specific laws which are actually applicable. However, every law will not apply upon every individuals. Rather, law has its own purpose and domain of application. And first of all, in light of the purpose of the law, there has to be an identification as to who are the persons who fall within the domain. Once such persons are identified, now the law has to apply equally upon all such persons. This process of identification is called reasonable classification. अब उसके बारे में भी लिख लो, how to do the reasonable classification. Write down. The purpose of the law has to be identified first, and then a criteria of differentiation has to be found, on the basis of which the people who fall within the domain and those not fall within the domain are identified. This criteria of differentiation should have reasonable connection. Nexus means connection. Should have reasonable nexus with the purpose of the law. The people who fall within the classification will be treated equally by the law, and those who fall out of it will remain unaffected by the law. Will remain unaffected by the law. इसको कहते हैं हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन. जैसे वो एग्जाम्पल था रियरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वाला. इसमें मर्डर तो 6 लोगों ने किया है, बट डेथ सेंटेंस किसको दोगे? दोज हु आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रियरेस्ट ऑफ रेयर केस. अदर विल बी पनिश्ड बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस. सो इसमें क्राइटेरिया क्या है? डेथ सेंटेंस क्यों? क्राइटेरिया इज रियरेस्ट ऑफ रेयर केस, because such persons are so dangerous into the society that their very existence into the society always keep creating fear element even if they are into the jail, and therefore they must be eliminated from the society, and therefore they will be given death sentence. There may be some peoples of reformative theory, they would not support the death sentence, but except them all will support. The criteria will change according the change in purpose, but the criteria has to be a reasonable connection with the purpose, and that reasonable connection is what is called reasonable nexus or reasonable differentia. Differentia means what? Differentia between these 4 persons who kept separate, or these 6 people when we talk about 302, and these people when we talk about the theft. And these peoples are fallen in the domain of the
this purpose of law, so the law will apply equally on all, and upon these people this law will not apply. 302 will not apply upon this. अब इसी में एक और टर्म है, वैसे तो जरूरी नहीं है बट इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। मान लो आपने रीजनेबल डिफरेंशिया बना लिया और आपने पाया ए बी सी डी ये 4 लोग इस लॉ के पर्पस के डोमेन में आते हैं, एंड देयरफॉर दे फॉल विद इन द क्लासिफिकेशन, एंड दीज 3 will do not fall, so they are not put into this classification. So this is what called a case of perfect classification. परफेक्ट क्लासिफिकेशन मतलब जितने लोग लॉ के डोमेन में आते हैं उनको तो साथ रखा और जो नहीं आते उनको बाहर रखा। बट देयर कैन बी केसेस वेयर, फॉर एग्जांपल जेड अब इसके क्लासिफिकेशन में नहीं आता, फिर भी जेड को आपने इस क्लासिफिकेशन में डाल दिया और जेड के ऊपर भी आप ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे हो। सो दिस इज नॉट द परफेक्ट क्लासिफिकेशन। ए बी सी डी फॉल इनटू दिस क्लासिफिकेशन, बट जेड जो नहीं फॉल कर रहा उसको भी आपने अननेसेसरली डाल दिया। दिस विल बी कॉल्ड द ओवर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। ओवर इंक्लूसिव मतलब जितने लोग आने चाहिए थे एज पर द रीजनेबल डिफरेंशिया, जितने लोग आने चाहिए थे उस क्लासिफिकेशन में उनसे ज्यादा को आपने डाल दिया। जो नहीं भी फॉल करते उसको भी आपने उस क्लासिफिकेशन में डाल दिया। दैट विल बी कॉल्ड ओवर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। ओवर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स व्हाट? Over inclusive means what? More than what ought to be included. Over inclusive means more than what ought to have been included. And similarly, उल्टा भी हो सकता है। अब suppose only the A, B, C, D fall into the criteria. X, Y, Z तो fall कर ही नहीं रहे। अब A, B, C, D fall कर रहे हैं into the criteria of that domain of law, but आपने खाली B, C, D को ही इस डोमेन में रखा, A को नहीं रखा, A को बाहर रखा इससे। Then what is that? ओवर का उल्टा कर लो, अंडर। दैट इज अंडर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। अंडर इंक्लूसिव मीन्स you have included the people in the classification less than the people who ought have to been included in the classification. That is under inclusive classification. अब एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा इस पर क्वेश्चन, पर इंटरव्यू में आ सकता है फॉर जुडिशियरी। लेस मीन अंडर मीन्स under inclusive classification means less than the people who ought to have been included, and over means you have added more than what ought have been included in the classification. अब आपकी 3 चीज हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, देन कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, ये भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज ग्रुप इक्वालिटी, द लार्जर ग्रुप इक्वालिटी, larger equality or group equality. So write down upon the larger equality or group equality, that is positive aspect. Write down Article 14 cannot be read as devoid of the essential concept of social justice, as social justice is the overarching principle. The phrase the equality before the law has to be interpreted in light of the concept of social justice. By merely doing individual equality, it will not be sufficient enough to serve the larger goal of social justice. There are existing circumstances in the Indian society which per se result into injustices, and which need to be rectified. The circumstance need to be rectified, which here used for circumstance. The circumstance need to be rectified. It is a duty of the state. It is the duty of the state to play a proactive role. Proactive means positive role. To be active, positive role. It is the duty of the state to play a proactive role in number 1, removing the circumstances of injustices, then number 2, in providing special protection or in taking special measures to protect, measures to protect the vulnerable classes in the society.
तो दो चीज़ें हैं, एक तो है कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल से वी रिलेटेड टू बैकवर्डनेस, जैसे कि कास्ट सिस्टम. अब कास्ट सिस्टम इज एन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस इन द सोसाइटी. Some people believe that they are of higher class and some people believe that they are of lower class, and regarding some people they are believing that they are the of lowest caste. So that discrimination is going on. अब मान लो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ है, तो ये इन दोनों को नीचे देखेगा और ये इसको नीचे देखेगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी. सो दिस इज द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो एक तो ड्यूटी स्टेट की है कि इस सिस्टम को ख़त्म करो आप, कि जिस सरकमस्टेंस की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं उस सरकमस्टेंस को हटाओ, उस सिस्टम को हटाओ. अब ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम को हटाना इतना आसान नहीं हो पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन अगेन एंड अगेन इन वेरियस जजमेंट इज टॉकिंग अबाउट of making a casteless society. Again and again they are talking about, but that is not that much easy in the Indian society. But by the time it may happen, but not as of today. तो जितनी ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ेंगी और जितने ज़्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस बढ़ेंगे, उतना ही धर्म और जाति के बीच ऊपर जो भेदभाव है वो ख़त्म होता जाएगा. सो जैसे जैसे आप जो जाति के आधार पर जो डिवीज़न है उसको ख़त्म करोगे, और उसको ख़त्म करना दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. तो अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, उसका एक केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 सुप्रीम कोर्ट का. लता सिंह LATA 2006 का सुप्रीम कोर्ट का केस है. इसमें एक कपल इंटरकास्ट मैरिज किया, उन्होंने अलग अलग जाति के लोग थे, दोनों ने शादी कर ली थी. यूपी का मैटर था और लड़की के घर वाले थे, उन्होंने लड़के के घर वालों को परेशान कर रखा था और धमकी वगैरह देना स्टार्ट कर रखा था. And police was cooperating in that. The police is not taking any action against the girl family. So इस केस में तो वैसे मर्डर जैसा कोई प्लान नहीं था, but they are torturing these people. तो खाप पंचायत वाला तो कोई ऐसा मैटर नहीं था इसमें, बट बॉय स्पेशली बॉय को ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे. तो फाइनली बॉय गो टू द कोर्ट एंड अल्टीमेटली द अपील गोज टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड द पॉइंट वाज कि इंटरकास्ट मैरिज मैंने किया है, एंड इज इट नॉट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट मी and my marriage and my wife? Is it not that I have taken a step which is off the track, but ultimately that is going to create one generation, one family or set of generations which will not be having caste divide among themselves. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंटरकास्ट मैरिजेज आर सेक्युलर एंड दे विल स्प्रेड सेक्युलरिज्म. नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, बट सेकुलरिज्म को हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं, कास्ट के लिए भी हम सेकुलरिज्म का यूज़ करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कास्ट डिवाइड को दूर करना है आपको समाज में, तो फिर आपको जो इंटरकास्ट मैरिजेज हैं उनको सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि प्रमोट और एंकरेज भी करना पड़ेगा इनटू द सोसाइटी. एंड द मोर ऑफ दिस थिंग्स विल हैपन ग्रेजुअली, द लेसर विल बी द कास्ट डिवाइड इन द सोसाइटी. सो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव. और एक केस में नहीं, बहुत सारे केसों में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने. एक खाप पंचायत वाला भी केस है, शायद भगवान दास नाम है शायद, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा क्लियरली. उसमें खाप पंचायत के बारे में कहा है कि खाप पंचायत का जो टैक्ट होता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, दैट यू शुड बोथ बी किल्ड एंड सो फोर्थ, दैट विल बी आउटराइटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हाँ, लेकिन अगर मैरिज एक ही गोत्र में कर लिया और सपिंदा प्रोहिबिशन के बाद कर लिया, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इवन देन यू आर नॉट हैविंग द राइट टू पनिश देम. एट द मोस्ट दैट marriage will be void. So the Supreme Court comes with a judgment. The Khap Panchayats are illegal and unconstitutional, and the state shall take strict action against them. So that is a law, but social realities में और law में there is a difference. सोशल रियलिटी तो ये है कि इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद यू हैव टू सफ़र. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पिता की 3 लड़कियां हैं और पहली लड़की अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहे और उसको लड़का पसंद भी है, उसके घर वालों को भी लड़का पसंद है, फिर भी उसके जो अदर 2 अनमैरिड सिस्टर्स हैं उनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ द सोशल सर्कमस्टेंसेस. तो इस वजह से घर वाले उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते. सो उनके लिए मुश्किल हो जाता है वो इंटरकास्ट अगर मैरिज करना चाहें, बिकॉज उनकी अदर 2 लड़कियों की शादी नहीं होगी अपनी कास्ट में. इस वजह से देयर आर चांसेस ऑफ ट्रबल इन देयर मैरिज अदर 2 डॉटर्स. और फिर पहली शादी के लिए उनको अपोज करना पड़ता है
to not do the intercaste marriage. So that is a social reality. But constitutional or legal reality क्या है? That these type of activities are unconstitutional. So इस तरीके से देखा जाए तो जो भी सिस्टम है सोसाइटी में या जो भी circumstances हैं which are creating those atrocities, discriminations, the state duty is to play a proactive role in removal of those circumstances. Similarly, when we talk about the untouchability is one circumstance which result into the atrocities upon particular caste of the society, so it is illegal and an offense. So is it not the duty of the state to remove the untouchability by making laws and by taking strict actions? बहुत सारे रूरल एरियाज हैं अब भी जहाँ पर अनटचेबिलिटी फुल फ्लो में प्रैक्टिस होता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद कोई SC ST का व्यक्ति और किसी मंदिर वगैरह में चले जाए तो उसके बाद जब पुजारी वगैरह होते हैं उस मंदिर के वो पूरे मंदिर को धुलाते हैं, या फिर इवन दे नॉट अलाउड ताला लगा कर चले जाते हैं जब पता पड़ता है कि कोई CM आने वाला है इस मंदिर में और वो इस जाति से बिलोंग करता है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। सो बाय दीज इंसिडेंट्स दीज पीपल्स आर नॉट इवन रेस्पेक्टिंग द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, एंड इन दिस वे दे आर इनडायरेक्टली or may we say directly not respecting the constitution itself. Similarly, जब पुराने रूरल एरियाज के जो गांव हैं उनको देखेंगे तो जो डाउन ट्रोडन लोग हैं जितने भी, उनको दक्षिण पश्चिमी एरिया में घर बनाने के लिए दिया जाता है, वो बाकी जगह पे नहीं रह सकते। दे विल स्टे एट ए पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द विलेज। वाई? बिकॉज उनका कुछ मानना हवा वगैरह का कुछ चक्कर। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज इनसेन। सो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिस आर going on in many parts of India today also. So, is it not the duty of the state to remove these circumstances? एक तो ड्यूटी है स्टेट का कि आप इन परिस्थितियों को बदलो। कोई भी परिस्थिति, फॉर एग्जांपल रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशन नहीं है, तो आप वो परिस्थितियों को बदलो। दैट इज वन ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और दूसरा, प्रेजेंटली जो लोग अफेक्टेड हैं, जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है या वनरेबल क्लासेस हैं, आप उनको प्रेजेंट प्रोटेक्शन दो। सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन, इट इज व्हेन वी गो फॉर look sexually, women are sexual vulnerable class. They are susceptible in the kinds of crime due to the mentality the men are having in India. Now you cannot change the mentality of men overnight. It will take decades to change the mentality. जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक मैन एंड वुमेन को इंटरमिंगल नहीं करोगे इन द डे टू डे लाइफ में, तब तक वो ओवरऑल चेंज इन सर्कमस्टेंस नहीं होगा। लाइक कोएड एजुकेशन ना हो, सिर्फ सिटी में नहीं, रूरल में भी। तो जब तक आप सबको उस तरीके का मेंटल ट्रेनिंग ना दो, तब तक द सिचुएशन विल नॉट चेंज अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो फॉर दैट मेंटल चेंज के लिए इट विल टेक सेवरल डिकेड्स, बट टिल देन will you let the women vulnerable till then, or will you let them suffer by these sexual crimes till then? A kind of horrific crime that men commits upon women, rape and so many other things they do. So for that, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा। So that is also social justice to a class which is women in this example. So परिस्थिति बदलने में तो अभी टाइम लगेगा, वो एजुकेशन से बदलेगी, बट फिलहाल के लिए आपको स्टेट को प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव रोल ऑफ द स्टेट। अब उसी प्रकार से एक एग्जांपल लें, जैसे वोटिंग के टाइम पर तो जो लीडर्स होते हैं ये SC ST कास्ट के, उनके भी कुछ ग्रुप लीडर्स होते हैं। तो अपर कास्ट में जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते हैं, तो वो जब वोटिंग के टाइम पे लीडर्स को पकड़ते हैं, उनके पास वोट मांगने जाते हैं, तो उधर दे अप्रोच देम, बट जब बात आती है उनकी इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए, उनकी इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, दे विल नॉट डू एनी मूव्स टुवर्ड्स देम। सो सिमिलरली जब गांवों में जो भंडारे होते हैं या फिर खाना वाना दिया जाता है, तो उसमें जो हरिजन समाज होता है या जाटव समाज होता है काफ़ी, तो इस तरीके के जो समाज होते हैं जिनको ये डाउन ट्रोडन मानते हैं लोग डाउनवर्ड्स, कुछ अदर कास्ट के लोग जो मेजर कास्ट के होते हैं उस गांव में, तो उनको खाने वाने की जब बारी आती है, उनको दे मेक देम टू सिट इन ए
सेपरेट रो, और वो अपने बर्तन भी अलग लेके आते हैं, उनके पत्तल अलग रखे जाते हैं, या फिर वो गिलास और पत्तल अलग लेकर आते हैं, या फिर उनके लिए अलग दिए जाते हैं, या फिर दहलीज के बाहर उनको बैठाया जाता है खाने के लिए फ्रॉम द सेपरेट प्लेस ऑफ द पीपल हु आर ऑफ द मेन कास्ट ऑफ दैट पीपल, वो दूसरी तरफ खाते हैं। तो या फिर बाद में उनको खिलाया जाता है सबके खाने के बाद। तो इस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता है। सो इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू चेंज द सर्कमस्टेंसेज। तो जितने भी एट्रोसिटीज़ वाले, वनरेबिलिटी वाले, जितने भी ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं, उनको आप चेंज करें, एंड दैट मे टेक टाइम। उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अब दूसरा, आप प्रोएक्टिव रोल प्ले करें। प्रोएक्टिव रोल टू प्रोवाइड द इमीडिएट प्रोटेक्शन। अब उसी तरीके से आपने किसी सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि घोड़ी पे किसी छोटी जात वालों को घोड़ी पे चढ़ के बारात में नहीं जाने दिया जाता गांव से। अगर उनका मोहल्ला आ जाए तो उनको उतरना पड़ता है उस घोड़ी से। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो उसके लिए प्रोटेक्शन देनी चाहिए स्टेट को कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, मारपीट ना हो। सो दीज टू थिंग्स आर द टू डायमेंशंस ऑफ द प्रोएक्टिव रूल। सो याद रखिएगा कि नॉर्मली हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्टेट हैज टू चेंज द सर्कमस्टेंसेज। There are many circumstances which per se results into unequal treatment, violation of social justice, violation of dignity. So उन किसी के साथ ऊंच नीच करना, भेदभाव करना, that is the direct attack on the dignity of those people. So this kind of system is in the Indian society. हम उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, बट उन्हीं से कार्य कराते हैं, अपने घर उनसे ही बनवाए जाते हैं, उनकी मजदूरी से। मंदिर बनना है तो उनके ही हाथों से बनता है। तो उधर भेदभाव नहीं होता। खेतों में वो कार्य कर रहे हैं तो उनसे कराया जाता है। सो इस वजह से आप कहते हो कि रिजर्वेशन टू एससी, रिजर्वेशन टू एसटी। तो उसमें भी जैसे सपोज 1000 व्यक्ति हैं एससीज में या 1000 एसटीज में, तो उनमें से 10% इनको अगर कोटा दिया गया तो 10% में 1000 में से 100 ही निकल पाए। अब उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो मेन स्ट्रीम पहुंच गए, वो आगे बढ़ गए, मेट्रो सिटीज में पहुंच गए, उनको बढ़िया क्वालिफिकेशन मिलेगी, बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी। तो वो कम्पीट करेंगे, वो आपस में कम्पीट करेंगे, उनके बच्चे ही निकलेंगे। तो बाकी के जो 900 बच गए गाँवों में, तो दे आर स्टिल डाउन ट्रोडन। उनकी हालत तो अब भी वैसी ही है, बिकॉज दे आर अनेबल टू कम्पीट विद दोज SC STs which are in the cities because they are having good facilities, good education. So जो बेनिफिट ले चुके हैं और जो जिनको अभी बेनिफिट नहीं मिला, उनमें तो अब भी डिफरेंशिएशन है। सो क्या ये ड्यूटी नहीं है स्टेट की टू रिमूव दिस सर्कमस्टेंसेस? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डू द जस्टिस विद इन द बैकवर्ड क्लासेज एंड SCs एंड STs ऑल्सो। द आंसर इज यस। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट काफ़ी सारे जजमेंट्स में SC STs के लिए तो नहीं बोला, बट OBCs के लिए दे हैव अप्लाइड द फर्दर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, क्रीमी लेयर भी लगा है। इंदिरा साहनी में तो बोला है कि देयर कैन बी अ कैटेगरी ऑफ लेस बैकवर्ड एंड पुअर बैकवर्ड क्लास इन द OBC, एंड स्टेट ग्रेजुअली गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन SCs STs में अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा है दैट लेस SCs और मोर SCs का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेसर STs और मोर STs, वहाँ पे दैट डिफरेंशिएशन इज नॉट डन, बट दैट शुड बी। SC ST में अब भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जबकि OBCs में लगता है। सो SC और ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। द गवर्नमेंट हैज टू मस्ट डू दैट, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट। सो राइट डाउन, द स्टेट हैज टू प्ले ए पॉजिटिव or positive role and do protective discrimination for the backward or the vulnerable class of people। ये vulnerable बार बार यूज कर रहे हैं बिकॉज ओल्ड एज पीपल हैं या वुमेन है, दे आर केम इनटू vulnerable, दे आर नॉट बैकवर्ड, therefore both words are used, backward or vulnerable। अब what is meant by protective discrimination? That is also called positive discrimination। देखो, डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव वर्ड। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब क्या? किसी को बेनिफिट देना और किसी को ना देना। सो दैट इज ए नेगेटिव वर्ड। बट द मोमेंट यू आर हैविंग द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स दैट डूइंग फेवर्स फॉर समवन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज इज सच वेयर
the state has to do protection to that group. So that is called positive discrimination or class legislation. Class legislation means आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को, वनरेबल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया या बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बेनिफिट के लिए आप लॉ बना रहे हो, उसी को आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोल रहे हो। जैसे एससीज हैं, यू आइडेंटिफाइड द एससी शेड्यूल कास्ट and you are making a positive law, beneficial laws for them or the protective laws for them, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल एट्रोसिटीज एक्सेट्रा। अब ये सारे लॉज आपने उनके बेनिफिट्स के लिए बनाए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एससी। ऑन द फेस ऑफ इट दे मे बी सीन डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मिले, लेकिन सोशल जस्टिस के लिए इज इट नॉट दे आर वनरेबल क्लास एंड दे मस्ट बी गिवन दैट प्रोटेक्शन? आंसर इज यस। And therefore when you do that positive discrimination for a certain group which in light of the requirement of social justice are vulnerable and they require that protection, then you will say that it is a positive or protective discrimination, or that is a class legislation. Legislating for a class is generally unconstitutional, लेकिन legislating for a class which requires that protection, that will be constitutional. So write down on it. Protective discrimination for class legislation, protective discrimination or class legislation, protective discrimination or class legislation will not be unconstitutional, as the purpose of protective discrimination or class legislation is to serve the ends of social justice. Thus, social justice being an overarching principle of the Constitution, comma, anything which is aimed at promoting social justice cannot be unconstitutional. अब इसके हमने चारों डायमेंशंस देख लिए। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये चारों डायमेंशंस वहाँ पे भी आएंगे, बट जो देखने का परसेप्शन है दैट विल बी डिफरेंट। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में जब लॉज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटेक्शन? It means giving benefits, providing security. So see, whenever there are laws, every law is having a specific purpose to give benefits to some people. हर लॉ का पर्पस ये है किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लोगों का बेनिफिट देना। अगेन द सेम लॉज यू टॉक अबाउट आईपीसी, डॉई प्रोहिबिशन एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट, अनटचेबिलिटी, any law you are talking about, and it is not the laws, it is also talk about the programs. You talk about the Jawahar Roजगार योजना, मनरेगा योजना, talk about any such program, राशन कार्ड, किसान सम्मान योजना, उनको भी आप लॉ की कैटेगरी में इस कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हो। एंड एवरी सच लॉ हैविंग द पर्पस टू गिव बेनिफिट टू द पीपल और गिविंग प्रोटेक्शन टू द people. IPC is having the purpose to give protection. So when you look at a law, a specific law, on the perspective of giving protection means give benefit to the people. So दो तरीके से देखेंगे ना हम। जैसे IPC की बात करें तो अगर थीफ है जो उसको पनिश भी करेगा IPC, और जो अदर लोग हैं उनको बेनिफिट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इट इज हैविंग IPC is having two folds. One is to provide protection to the people, that is victims, and on the other hand it is having purpose to punish the wrongdoers. So उसी तरीके से हर एक लॉ को अगर हम देखें तो उसके दो एंगल होंगे, to giving the protection to the victims, people, other peoples, and other is to give punishment to the criminals or penalizing the people who has violated that law. जहाँ तक penalize के प्रोस्पेक्टिव से था, when we talk about the equality before the laws, there we talk about in that sense, but the same laws will be having the purpose of giving protection, and while giving the benefits to the people, will not the rule of law apply? Will not the rule of non-discrimination apply? Will not the rule of reasonable classification apply? अब for say example IPC का कोई एक लॉ समझ लो। अब IPC give the protection to you and me, the crime is not to be committed against us, we are all different individuals. अब now क्या can the IPC give greater protection to me and less protection to you? It gives the equal protection. तो यहाँ पे क्या मैं लॉ से अबव हूँ या फिर कोई और यहाँ पे लॉ से अबव है? तो नहीं है, वी आर नॉट अबव द लॉ, तो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे भी लग गया।
क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, बराबर का मिल रहा है। When the application of law is concerned, no one is above the law. When the benefits of the law is concerned, then there also no one is above the law. Everyone should get the equal benefits as per the law. I cannot have more benefit, you cannot have more benefit. None of us can be above the law. उसी तरीके से रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी इम्प्लिसिट है। उसी तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जब बेनिफिट देने की बात आती है, कोई भी एक लॉ सोच लो आप, फॉर एग्जांपल वुमेन से रिलेटेड कोई लॉ सोच लो, सपोज डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। द पर्पस ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इज टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू ऑल द वुमेन एंड देयर फैमिलीज। डॉरी, कैन द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बी डिस्क्रिमिनेटरी? That the women in Delhi will get the protection, but women in Ludhiana or UP will not get the protection. Can the Dowry Prohibition Act do that? Or the woman of a particular caste will get the protection of, or the another woman from other caste will not get the protection. Can that act do that? Can there be a discrimination in that matter? No. The answer is no. Non-discrimination यहाँ पे भी आया कि नहीं आया? I told you in the beginning that these are the mirror replica with each other. These two are, दोनों का डायमेंशन सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को बेनिफिट के नज़रिए से देखते हो और इक्वालिटी बिफोर लॉ को आप लॉ के एप्लीकेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो। सिमिलरली जब आपको एक पर्टिकुलर लॉ का बेनिफिट देना है तो आप बेनिफिट उसी को दोगे ना जो उस लॉ के बेनिफिट के लिए इक्वली सिचुएटेड हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का बेनिफिट आप किसको दोगे? ए वुमेन हु इज सफरिंग फ्रॉम डाउरी, जिससे डाउरी नहीं लिया गया, जिस वुमेन से जो नॉट सफर्ड फ्रॉम डाउरी, उसको आप प्रोटेक्शन दोगे? नो। सो द बेनिफिट्स ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट शुड बी गोज टू दोज हु आर इक्वली सिचुएटेड टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, and then there should not be any discrimination. They should all get the equal benefits of Dowry Prohibition Act. If a woman who is poor, उसको Dowry Prohibition Act का benefit नहीं मिल रहा है, though she has suffered, but a woman who is rich or belonging to a reputed family, उसको Dowry Prohibition Act का benefit मिल रहा है because she belongs to a good family or reputed family, will this be permitted? No. So in that way there has to be a reasonable classification from that perspective also. अब larger sense में देखोगे तो larger equality के context में you talk about again the same thing. Suppose there are certain women who belong to a socially lesser class and some women who are belonging to socially higher class. Now the higher class women are getting the benefits and the lower class means socially lower class, those women, because they belong to the lesser class, they are deprived of these benefits automatically. Then is it not the duty of the state to uplift them and give the benefit of law equally to them also? So that is where the concept of larger equality is also implicit. What I am trying to tell you is कि सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि देखने का नजरिया अलग है। मीन्स किस एंगल से आप देख रहे हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ में लॉ अप्लाई किस पे करेगा? अप्लाई उन पर करेगा जो इक्वली सिचुएटेड है, उन पर बराबर अप्लाई करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो वनरेबल हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉ उन पर ठीक से अप्लाई नहीं करेगा या बराबर अप्लाई नहीं करेगा, तो उनको आपको अपलिफ्ट करना है या उनको आपको प्रोटेक्शन देना है। यहाँ भी लॉ का बेनिफिट किसको मिलेगा? उधर तो है लॉ अप्लाई किस पे करेगा और यहाँ लॉ का बेनिफिट किसको मिलेगा। यहाँ पर भी लॉ का बेनिफिट हर एक किसी को बराबर मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लॉ. There should be a reasonable classification so that all of them get the equal benefits of law. No one is above the law and therefore the rule of law prevails, and no one will getting the extra benefits because he thinks or he skipped above the law. Everyone will get equal benefits. And most importantly, there are certain classes in the society which are vulnerable or which are socially backward. Those classes also should get the equal benefits of the law, and therefore the state has to play a proactive role so as to give them the extra protection, so as to give them benefits equally to the other classes, equally that the other classes get. That is the concept of larger equality in the Indian Constitution. So social justice अगर करना है
तो आपको बेनिफिट्स ऑफ लॉ सबको बराबर देना होगा। अब जैसे मान लो मनरेगा प्रोग्राम है, तो इसमें जो लोग कंपैरेटिवली लेसर क्लासेस को बिलोंग करती हैं उन लोगों को आप बेनिफिट ना दो, और जो लोग हायर क्लासेस को बिलोंग करते हैं उन्हीं को आप बेनिफिट दो। इज इट नॉट सोशल इनजस्टिस? यू टॉक अबाउट बीपीएल का बेनिफिट्स। अब बीपीएल का बेनिफिट्स सभी को, पॉवर्टी लाइन से जितने भी नीचे हैं सबको बराबर मिलना चाहिए। अब देयर आर द क्लासेस इन द सोसाइटी विच आर वनरेबल, विच आर लेसर इन कास्ट। अब लेसर कास्ट के जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली डिप्राइवेशन होगा फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट्स बिकॉज दे आर नॉट एज सोशली इकोनॉमिकली डेवलप्ड, so will not the state has to take special measures to ensure that they also get the equal benefit of the that yojana, that is BPL benefits. This is what called is distributive justice. Distributive justice का मतलब है that every law has got the purpose of doing justice to the society in some manner or the other, doing some benefit to the society. You have to ensure that the justice or the benefits you seek to do to the laws that is equally distributed among all groups, and for that the state has to play a proactive role to ensure that the benefit is given to all those people, and that is what called again the concept of protective discrimination, the concept of class legislation, the concept of proactive role of the state. Now write down: equal protection of laws is to be seen from the perspective of benefits of law, which has to reach the people, and every law has the purpose to give some protection or benefit to the people. In this phrase also, the concept of rule of law and non-discrimination and reasonable classification will apply, but from the perspective of giving equal benefits to the people. This next paragraph, this phrase actually relates to distributive justice. That is, it is the duty of the state to ensure that the benefits of justice should reach to every individual and every class of the society. There are some classes, because of their vulnerability or because of their backwardness, may not be able to reap, mean or take, may not be able to reap those benefits. It is the duty of the state to play a proactive role. यही तो होगा proactive discrimination. It is the duty of the state to play a proactive role by either uplifting these classes or by giving them special protection or by changing the discriminatory circumstances so as to ensure that these classes also get the equal benefits of the laws. अब यहाँ पे भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्लास लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऐसे ही लागू होगा जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ में लागू हुआ था। तो इसको अपने आप लिख लेना। दोनों फ्रेजेज हैं जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, दोनों फ्रेजेज को आप सोशल जस्टिस की लाइन में ही इंटरप्रेट करोगे। बस दोनों में फ़र्क ये है कि उन्होंने दोनों प्रोस्पेक्टिव से इस बात को बताने की कोशिश की है, एक को लॉ के एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से और दूसरे को लॉ के बेनिफिट्स के हिसाब से। बेनिफिट्स के हिसाब से भी आपको प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा, स्टेट को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और इक्वल अप्लाई करे उसके लिए भी आपको प्रोएक्टिव रोल अप्लाई करना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन दैट अप्लाइज नॉट ओनली एज टू अपॉन द हु विल द लॉ अप्लाई इक्वली, rather it applies to also to the perspective of as to who are the persons who need to be given the benefits of various laws. So from both the perspectives, reservation has to be given और positive action has to be taken. तो ऐसा नहीं आप अलग अलग रिजर्वेशन दोगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के लिए अलग और इक्वल प्रोटेक्शन के लिए अलग। एक्शन एक ही होगा
लेकिन दोनों पर्पजेस सॉल्व करेंगे. So when you talk about the equal protection of the laws, every law that is passed that is for the purpose of providing some kind of benefit to the people. Benefit, you can say, that is called the protection. The purpose is to remove some mischief in the society. On the one hand, the law has the purpose of removing the wrongs from the society, and on the other hand, it will apply to the persons who commits the crime. When you talks about that it applies upon those who commit the crime, there you will look at the perspective of that is equality before the law. जब आप उसके एप्लीकेशन की बात करते हो, then you are talking about the equality before the law. किसके किसके ऊपर law apply होगा. That is, no one is superior to the law and everyone has equally treated by the law. So if in IPC 4 people are committed a same crime, then they are all equally treated by the law and law will equally apply upon them. But at the same time, the IPC has also got the purpose of removing what mischief, the crime, removing or preventing the crime. So it will provide protection to the people. It will provide the protection to the people against the criminal act. Suppose take example of rape. Suppose 5 people are committed rape, then all 5 are should be treated equally. Means the law will apply, the 376 IPC will apply equally upon them all. That is, they are all equal before the law, and therefore since they fall into the category of in the offense of rape, they all shall be treated equally. But at the same time, the offense of rape, that is 375, 376, has the purpose of providing protection to women, and therefore all the men should get equal protection of 375 and 376. All the women. Of a woman who belongs to a backward class or maybe a more vulnerable class, she does not get the protection because of her status, and a woman of a higher class gets the protection because of her status, then that is an unequal treatment, and that is where the equal protection of laws gets benefit. So there, if you talk about, आप दोनों तरफ से देखें, we talk about backwardness, you talk about the backward classes. If there is a backward class, so you have to ensure that whatever law is applicable, the law should apply equally upon all. Applies equally upon all, matlab equal upon all means a person who belongs to a backward class is brought into the category of law and is punished, but a person who is belong to higher class because of his influence, because of his money, etc., he is not punished. So that is also unequal treatment. And the other hand, a person belonging to a backward class get the protection of that law because he belongs to a more developed class. But a person who belongs to a backward class does not get the protection of that law because of his status. So that is also a unequal treatment. But that way, here we are talking about from the point of view of protection of the laws. So that is what I said, that law को आप दो perspectives में देखोगे. एक तो वो law किस किस पर लागू होगा, किस किस को punish करेगा या किस किस को penalize करेगा, और दूसरा उस लॉ का बेनिफिट कितने लोगों को मिल रहा है. सबको बराबर मिलना चाहिए. सिर्फ इस वजह से कि आप हायर क्लास से बिलोंग करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा और किसी और को नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है, then that is also a violation of the principle of equality. So then when we talk about the reservations or the proactive role, the positive aspect, or you say the positive discrimination, that some people belong to this class and some people belong to this class. Of those who are belong to higher class, the law will not apply upon them only because they are belong to higher class, and the persons who are belonging to lower class, they were punished only because they are belong to lower class. That is discriminatory. Equality before the law is violative, and similarly the benefits of law is available to this higher class. The higher class, I do not mean the socially or caste wise higher class. It can be less vulnerable or more vulnerable class. Now simply it belongs to the higher class. You are getting the protection, the benefit of that law, and the person who are belonging to the lower class is not getting the benefit or the protection of law. There also it is violative of social justice, and therefore be it the equality before the law or be it the equal protection of the law, from either perspective this group has to be uplifted and brought to the upper level, equal level, so that they all get the equal benefits of the law.
plus the circumstances which resulted into the backwardness. The circumstances also by the state efforts have to be removed so that they automatically rise to equal level and that discrimination does not have. So there I told you that the doctrine of reservation and the doctrine of proactive role has to be there not only in the proactive, has to be there not only in equality before the law but also in equal protection of laws also. जो ज़्यादातर लोगों को मिसकंसेप्शन है वो ये रहता है कि रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा विल फॉल इन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होगा। रेदर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। बुक्स ऑलवेज राइटिंग दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बुक्स में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश कॉन्सेप्ट, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन डाइसी का कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ एंड ऑल, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज is what provides for the reservations and positive discrimination. But what I clarified is that this positive discrimination is there in both the phrases, equality before the law and equal protection of law. ये सवाल पूछ चुके हैं, एक बार आईएएस में पूछा था that how is the concept of reservation is implicit in equality before the law. अब कई लोगों ने ये सोचा था उसमें कि that is misprinting, मतलब equal protection of the laws की जगह उन्होंने इक्वलिटी बिफोर द लॉ कर दिया। तो कई लोगों ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का आंसर लिख दिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ की जगह। बट उस पर उससे ठीक पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इन विच द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रिजर्वेशन एंड पॉजिटिव एक्शन इज इम्प्लिसिट इन इक्वलिटी बिफोर द लॉ as well. So as far as Article 14, the main interpretation has to be done in the light of social justice, and it is here that the larger concept of equality is to be found. इतना तो पता है सबको for both the phrases. अब Article 14 में social justice तो है, that is the main principle. अब social justice के लिए जो भी proactive action, जो भी positive action state लेगा, that can be taken under Article 14 itself. Be it upliftment of the backward classes, be it be the special provisions for the SCs or STs, be it for women and children, be it for educational facilities, be it for old age persons, senior citizens, be it for small child, be it for maternity benefit to the woman, be it any kind of thing, be it for the elimination of the poverty, be it for building the infrastructure. At certain places the crops are spoiled because of the excessive rainfall. In some places there is drought, so that balance has to be brought about by giving them compensations. All those things that to be done, and all those things that the state does, that is for the larger purpose of social justice. So कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर सूखा है, तो there are policies to be made by the state for water harvesting, rivers की connectivity, increasing the groundwater level, using the rainwater and preserve them for the use instead of the groundwater. So इस तरीके के policies का क्या है? These are the policies to bring about the social justice at the larger scale, at the macro scale. मतलब सिर्फ एक backward class को आपको नहीं देखना है. Entire region is suffering. Entire region is suffering and therefore the state has the duty to take care of that. So उस sense में देखो तो anything the state does that can be done under Article 40 for the larger purpose of social justice and for the purpose of bring about equality amongst the groups. For example, say the places in the Uttarakhand, in extreme northern part of the Uttarakhand, there is lack of infrastructure. उसकी वजह से लोगों ने पलायन कर दिया, गांव खाली हो गए. उसी वजह से China भी crossing the boundaries, Nepal, China, all these encroaching the Indian territories, because the villager peoples are one of the protector of the इंडियन बाउंड्री टेरिटरीज. बट अगर उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, सर्वाइवल ऑफ लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, तो व्हाई वुड दे लिव देयर? सो these people also have the right to get the good educational institutions. These people are also having the right to have the transport facilities and roads. Even the mobile connectivity is not there, तो टावर्स वगैरह होना, तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिया to different operators by the government. Why this is to be done? Because they are having the right and the state is taking special measures for them and packaging this
packages are announced for them, special packages. So that is all for the proper purpose of social justice. जो लोग ऐसे रिमोट एरियाज में रह रहे हैं और जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो उनमें ये डिफरेंस क्यों? Only because of the geographical locations, and therefore it is the duty of the state to take special efforts to provide those facilities there also. और जो भी ऐसे एक्टिविटीज हो रहे हैं, that is for larger social justice, and all that can be done under Article 14. Not only in Article 14, look at from the different perspective. Article 21 के perspective से भी देखो. A person living in the northern part of the Uttarakhand, and merely because of the geographical indications he is not getting that benefits, so is it not the violation of his right to life and personal liberty that you provide resources to the other people but not to the people in these remote areas, those areas? So they are losing upon their right to life and personal liberty. Article 21 also affected, and at the same time there is an unequal treatment, so Article 14 also violated. So दोनों की आप बात कर सकते हैं. For the Article 14 also the state can take efforts, and the same efforts can be taken by the state for Article 21 also. What I am highlighting is, अगर Article 15-16 नहीं होते, फिर भी whatever the measures the state can take, proactive measures, that could have been taken under 14 itself. What we have done in 15 and 16 is कि 14 में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, तो हमने कुछ चीज़ों को उसमें से 14 में ना रखकर उसको अलग से डिक्लेयर कर दिया 15 और 16 में. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें 14 में नहीं है, दे आर स्टिल इन आर्टिकल 14, बट वी हैव मेक special provision for those in Article 15 and 16. So whatever is covered here in 15-16, that is fine, but whatever it is left out, that will all fall under Article 14. ये पहले भी बता चुका हूँ. So write down, under Article 14 the state can take proactive, that is positive action for the purpose of social justice, and all proactive measures, MEASURES, measures can be taken under Article 14 itself. Article 15 and 16 have certain proactive measures of state expressly provided, though these would have otherwise fallen under Article 14. Whatever is not covered by Article 15 and 16 will still fall under Article 14, and that gives that width and scope to the state to take, positive measures or protective discrimination. So that's it. What about the 14? And from here the linking of 15-16 also start. In the next lecture we would continue the Article 15. That's it for this lecture. Thank you for watching this lecture.